स्टार्ट हुआ ना? स्टार्ट करें? हेलो एवरीवन, आज हम एसक्यूएल के फाइनल में हैं। एसक्यूएल 2024 फाइनल। हमारे यहाँ दो टीम फाइनलिस्ट आए हैं। टीम लाउड लेड बाय मृणाल बोरसे फ्रॉम एसजीबी नीट एंड टीम स्टेलर लेड बाय ओंकार राजाध्यक्ष फ्रॉम एसजीबी 1। आज का जो क्विज राउंड है वो डिसाइड करेगा और डिक्लेयर करेगा कि हमारा विनर कौन रहेगा एसक्यूएल 2024 का। लास्ट वीक एसक्यूएल 2024 में 8 टीम्स ने कंपीट किया था, एसजीबी 1, एसजीबी 2 एंड एसजीबी नीट से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जनरल नॉलेज, सब्जेक्टिव जेईई क्वेश्चंस, ऐसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो जीतने वाली टीम्स थी वो भी कभी कभी हार की कगार पे आ गई थी। और इतना सारा कंपटीशन होने के बाद एसजीबी 1 से जो लीड कर रहे थे ओंकार राजाध्यक्ष, दैट वाज टीम स्टेलर्स, एंड एसजीबी नीट से जो लीड कर रहे थे मृणाल बोरसे, दैट इज फ्रॉम एसजीबी नीट, वो टीम लाउड फाइनल्स में आ गई है। तो चलिए आज का राउंड शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट राउंड है फिजिक्स राउंड, जिसमें हर टीम को 5 क्वेश्चंस ईच पूछे जाएंगे। वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर इनका आंसर राइट आता है तो उनको +1 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आता है तो उनको 0 मार्क्स मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले कौन सी टीम स्टार्ट करेगी ये डिसाइड करने के लिए हम कॉइन फ्लिप करने वाले हैं। तो कैप्टन्स खड़े हो जाए। ये हेड है, ये टेल है, बराबर। So ladies first, what would you want? Head or tail? Heads. It's a tail. You won the toss. किसके साथ शुरू करें competition? Yes. So it is decided that we'll start with team loud. First round physics, 5 questions. Let us start. So be ready. आप अपने आप में डिस्कस करके भी आंसर दे सकते हैं। बाकी कोई डिस्कस नहीं करेगा, आंसर डिस्क्लोज नहीं करेगा और आपके पास टाइम अनलिमिटेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट राउंड क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, दे आर ऑल फ्रॉम योर सिलेबस। रैंडम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क। L raised to 1, M raised to 1, T raised to -2. L raised to 1, M raised to 1, T raised to -2 is the dimensional formula for which of the following? First option is velocity, second option is acceleration, third option is force, fourth option is work. Do you want me to repeat the question? No? Yes. You can discuss and let us know the answer. Yes, team loud, are you done? Yes, you are ready with the answer? Yes, what is your answer? Force. Yes, very good, तालियां। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उनको मिलते हैं +1 मार्क्स। वेरी गुड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज for a particle having
a uniform circular motion, which of the following is constant? For a particle having uniform circular motion, which of the following is constant? So recall question है. First option is speed, second option is acceleration, third option is velocity, and fourth option is displacement. First option speed, second option acceleration, third option velocity, and fourth option displacement. Ready with the answer? What is your answer? Option is speed. Option A, speed. Very good. Talia. Correct answer. +1. Now, the third question from physics. A charge of +7 microcoulomb. A charge of +7 microcoulomb is placed at the center of two concentric spheres with radius 2 cm and 4 cm respectively. A charge of +7 microcoulomb is placed at the center of two concentric spheres with radius 2 and 4 cm respectively. The ratio of flux through them will be. The ratio of flux through them will be. Options are. Question clear? First option is 1:4. Second option is 1:2. Third option is 1:1. Fourth option is 1:16. You want me to repeat the options? No? Okay. That is the third physics question. It's a solving question. You're done? Option C, 1:1. Option C, 1:1. Let me check. Yes, your answer is correct. Again, +1. So far, all three questions of physics, all the answers are correct. Next, which of the following produces uniform electric field? Recall question. First option is point charge. Second option is linear charge. Third option is two parallel plates. And the fourth option is charge distributed on a circular plate. Which of the following produces uniform electric field? First option point charge. Second option linear charge. Third option two parallel plates. And the fourth option is charge distributed on a circular plate. So far, Team Loud has all the answers correct. They are leading with 3 marks in round 1. Ready with your answer? I'll repeat the question. Which of the following produces uniform electric field? First option था point charge, second था linear charge, third था two parallel plates, और fourth था charge distributed on a circular plate. टीम लाउड पे बहुत प्रेशर है. अभी तक तीनों आंसर्स उन्होंने करेक्ट दिए हैं. अर्पित अपने हिसाब से अकेले लगे हुए हैं आंसर निकालने के लिए. बाकी तीनों डिस्कस कर रहे हैं. इसी टीम वर्क की वजह से और अर्पित के अकेले सॉल्व करने की वजह से टीम लाउड आज फाइनल में आ चुकी है.
और शायद जीत भी जाएगी। Team Loud is discussing about point charges, how they produce electric field, whether it is uniform, non-uniform. Are you ready with the answer, Team Loud? There are two groups. Yes, discuss and let us know the answer. आरुष जो लेक्चर में बात भी नहीं करते, आज बहुत डिस्कशन कर रहे हैं। आरुष एके मांगा। Are you ready with the answer? Yes, done? D. Yes, D means Circular. charge distributed on circular. And finally, टीम लाउड का एक आंसर रॉन्ग हो चुका है, तो 0 मार्क्स। पैरेलल होता ना? Yes, the correct answer was 2 parallel plates. They produce uniform electric field. So how many questions, ma'am? 3. 1 wrong. Now the last question of round 1, pretty interesting round. Last question, it is also a recall question. Which of the following is an ohmic conductor? Options are transistor, vacuum tube, electrolyte and nichrome wire. Transistor, vacuum tube, electrolyte and nichrome wire. आपके फेवरेट चैप्टर्स इलेक्ट्रिक सेक्शन से। टीम स्टेलर को बड़ी घाई है आंसर देने की। Question repeat. Which of the following is an ohmic conductor? Options are transistor, vacuum tube, electrolyte and nichrome wire. Yes, you are ready with the answer? What is the answer? Say the option. And nichrome wire. श्रीमान, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है, तालियां। इस तरीके से टीम लाउड का फर्स्ट राउंड खत्म गया है। राउंड 1 में मैडम उनको कितने मार्क्स मिले हैं? 5 out of 4. 4 out of 5. 4 out of 5। मैडम के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ गया, बहुत ही इंटेंस कंपटीशन चल रहा है। So very well played. Now we start with team Taylor. First round physics. Similar kind of questions will be asked. Same type. Let us see how good they perform. और चैट में हमें बताते रहिए कि कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ किसको, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। Let's start. So the first question for team Taylor is, no pressure guys, but उनके 4 आंसर सही आए हैं। The wire of length capital L and resistance capital R is stretched so that its radius of cross section is half. Radius of cross section is half. What is its new resistance? What is its new resistance? Clear with the question? Shall I give you the options? 5R, 8R, 4R and 16R. You can take as much as time you want, discuss and then give me the final answer. You want me to repeat the question? Is it clear? Team Taylor is in complete silence.
Options? You want me to repeat the options? Options are 5R, 8R, 4R and 16R. टीम टेलर कंफ्यूज लग रही है. Yes, you are ready with the answer? 16R. The answer is 16R. So, final? So, it was a pretty difficult question for team tailors. They took their time. और आपका जवाब सही है, तालियां. +1. Next. Next question. The error in the measurement of sides of a rectangle is 1%. The error in the measurement of sides of a rectangle is 1%. The error in the measurement of its area is. Options are, question clear है? Options are 1%, 0.5%, 2%, 3%. Options are 1%, 0.5%, 2% and 3%. This question is from the chapter of units and measurements, in which we study errors and error analysis. जो टीम्स हारी है वो सोच रहे हैं काश हम होते फाइनल्स में, हम इन सवालों का जवाब बहुत फास्ट दे देते, है कि नहीं? Ready with the answer? Teams टेलर सेकंड, राइट सेकंड नंबर. सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 2%. बहुत ही सोच समझ के विचार विनिमय करने के बाद उन्होंने ये आंसर दिया है, एंड द आंसर इज करेक्ट. तालियां. आज टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लाइव स्ट्रीम में हमारी नाक नहीं कट रही है. नेक्स्ट, अ वेरी सिंपल रिकॉल क्वेश्चन. जैसे टीम लाउड को एक डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा गया था, सिमिलरली a dimension related question
for team stellar. Dimensions of kinetic energy are same as that of, options are force, acceleration, work, pressure. Force, acceleration, work, pressure. Janvi, team Taylor can listen to you. You can discuss, but they'll know the answer then. मैडम कितवा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन चल रहा है. अभी तक टीम स्टेलर का कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं हुआ है. मैं भी देखता हूँ चैट में क्या क्या आ रहा है, एक बार दिखा दो. आन्सर आले सर. अर्पित तिथे उघडून बसले. एक ही बच्चा. सोहम चौहान टीम लाउड को सपोर्ट कर रहे हैं. मास्टर ऑफ ऑल बोल रहा है फॉर्मेट ही वेस्ट है, शायद इनकी टीम हार गई थी. विघ्नेश पिंगळे आंसर दे रहे. श्री दांडेकर इज सपोर्टिंग टीम स्टेलर. विघ्नेश बोल रहे हैं टीम लाउड को कंपटीशन ही नहीं है. आर यू रेडी विद द आंसर? टीम लाउड को बहुत सपोर्ट है. स्पाइडी गेमिंग भी टीम लाउड को सपोर्ट कर रहे हैं. कौन सा? टीम स्टेलर. वर्क. बिल्कुल सही जवाब. तालियां. किती क्वेश्चन झाले मॅडम? 3 झाले. ऑल 3 वर करेक्ट. Okay. Next question. An electron is placed between two parallel plates connected to a battery. If the battery is switched on, the electron will. Options are be attracted to the positive plate, be attracted to the negative plate, remain stationary, will move parallel to the plates. Will move parallel to the plates. 4 क्वेश्चन है ना? Done? Yes. What was the question? I also forgot. What is the answer? Yes. Correct answer. +1. Now the next question, similar to team out. A metallic sphere A, isolated from the ground, is charged to 50 microcoulomb. This sphere is brought in contact with other isolated metallic sphere B of half the radius of sphere A. The charge on the two spheres will be now in the ratio. Options are 1:2, 2:1, 4:1, 1:1. पांचवा क्वेश्चन है मैडम.
टीम लाउड का स्कोर है +4 एंड टीम स्टेलर का स्कोर अभी तक +4 है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर राइट आता है टीम स्टेलर का, तो टीम स्टेलर लीड करेगी विथ +5 पॉइंट्स। लीड विथ +1 पॉइंट, लीड विथ +5 पॉइंट्स, व्हाटएवर टीम स्टेलर लीड करेगी। ऑप्शंस क्लियर है ना? आई थिंक टीम स्टेलर का ये पॉइंट जाने वाला है। दे आर वेरी कंफ्यूज। टीम लाउड खुश हो रही है। Done? Yes. Ready with the answer? Ready? What is the answer? 1:2. And श्रीमान, बहुत ही खेल के साथ बताना पड़ रहा है कि आपका ये जवाब बिल्कुल गलत है। टीम लाउड बहुत खुश हो गई। अरे सैड वाली म्यूजिक बजाना, ऐसा गलत वाला हो जाए तो ठीक है। तो अभी तक दोनों टीम्स के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है विथ +4 पॉइंट्स ईच। नाउ विल स्टार्ट। करेक्ट आंसर पूछा ही नहीं टीम स्टेलर ने। 1:1 was the correct answer. Let's start with chemistry. 5 questions each. We'll start with team loud. पहला क्वेश्चन है, a sample of pure water, whatever the source, always contains dash by mass of oxygen and 11.1% by mass of hydrogen. Dash by mass of oxygen and 11.1% by mass of hydrogen. Options are 16, 16, 80, 80, 18, 18 and 88.9. Clear with the question? A sample of pure water, whatever the source, always contains dash by mass of oxygen and 11.1% by mass of hydrogen. नहीं चाहिए। डेल्टा इंजिन निकलता नहीं आता सर। It's a trick question, guys. मेरे फोन से मस्ती कर रहे हैं सर। चैट्स डाल रहे हैं। मेरे फोन से मस्ती कर रहे हैं। यश, आवाज। यस, टीम लाउड। किती वाजव? काय जोरात फुल गलत है तो सैड वाला। अच्छा, उसको Options? You want me to repeat the options? The options are 88.9, 18,
80 and 16. इस साल देयर इज नो लाइफ लाइन, नेक्स्ट ईयर हम लाइफ लाइन भी लाएंगे. Yes, team loud, are you ready? Are you ready with the answer, team loud? बहुत गहन डिस्कशन हो रहा है. Yes? 80 एंड यह आंसर बिल्कुल सही है. +1 टू टीम लाउड इन द सेकेंड राउंड. अब आता है नेक्स्ट सवाल. विच क्या हुआ? वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर will read the same value on Celsius and Fahrenheit scales. Options are -40 degree, +40 degree, -80 degree and -20 degree. -40 degree? Yes, very good. Correct answer. मैडम को लिख दे. +2. कितना क्वेश्चन होता है? Next question, third question. Which of the following has maximum number of molecules? First option is 7 gram nitrogen. Second option is 2 gram hydrogen. Third option is 8 gram oxygen. Fourth option is 20 gram NO2, nitrogen dioxide. बराबर बोला? हाँ बराबर बोला. NO2. ठीक है. You want me to repeat the options? Which of the following has maximum number of molecules? Maximum molecules. Option B. Final answer? Yes, very good. Correct answer. Third question. It was the third question. All three answers they got it right. Next question for chemistry is the energy difference between shells goes on dash when moved away from the nucleus. The question is the energy difference between the shells goes on dash when moved away from the nucleus. The options are increasing, decreasing, equalizing and static. Increasing, decreasing, equalizing and static. टीम लाउड का फोर्थ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. अभी तक उनके सारे के सारे आंसर्स करेक्ट है. You want me to repeat? The energy difference between the shells goes on dash when moved away from the nucleus. The options are increasing, decreasing, equalizing or static. Decreasing. Final answer? Decreasing. बिल्कुल सही जवाब. तालियां. यहाँ पे विघ्नेश वेट कर रहे हैं कि कब एक आधा जवाब गलत जाए और इनको जिस जॉब के लिए बिठाया गया वो जॉब वो कर पाए. अभी तक 4 केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकेंड राउंड में. ऑल 4 आंसर्स करेक्ट.
All 4 answers correct. Now the final question of chemistry to team Loud. Which of the following molecule is linear? Options are SO3, silence, CO2, H2S, Cl2O. SO3, CO2, H2S and Cl2O. Which of the following molecule is linear? पांचवा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है अभी तक, एंड दोनों टीम्स का स्कोर अगर देखा जाए राउंड 1 में क्या था मैडम? राउंड 1 में स्कोर दोनों का +4 +4. फाइनल आंसर CO2 is linear. Arpit seems confused. Sure, CO2. And the answer is correct. तालिया. इस तरीके से सेकेंड राउंड में केमिस्ट्री के राउंड में +5 लेके टोटल स्कोर हो गया है टीम लाउड का +9. Now we'll be moving to Team Stellar with 1 plastic surgery and gender transformation. And I don't know. So let us start with chemistry for Team Stellar. Let's start with the first question. In the reaction N2 plus 3H2 giving ammonia के 2 molecules. N2 plus 3H2 giving ammonia के 2 molecules. The ratio by volume of Arpit, the ratio by volume of N2, H2 and NH3 is 1:3:2. 1:3:2. This illustrates the law of. Options are definite proportion, reciprocal proportion, multiple proportion, gaseous volume. Definite proportion, reciprocal proportion, multiple proportion, gaseous volume. अभी तक बहुत कांटे की टक्कर चल रही है. विघ्नेश वेट कर रहे हैं कि he needs to do the job for which he was hired, but टीम्स इतनी स्ट्रांग है कि आंसर ही रॉन्ग नहीं जा रहे. First chemistry question for round 2, team Stellar. बच्चे मेरे इंग्लिश का मजाक उड़ाते हुए जैसे कि उनको बहुत कुछ आता है. मैं भी सेमी इंग्लिश का हूँ. सेमी इंग्लिश रॉक्स गाइस. ओपी इन द चैट सेमी इंग्लिश. Yes, you are ready with the answer? What is the answer? Law of definite proportion. Final answer? Yes. Vignesh ji, you can be ready with your job because श्रीमान आपका ये जवाब बिल्कुल गलत है. वापस एक बार. श्रीमान आपका ये जवाब बिल्कुल. अरे बजाओ. So 0 marks for the second question. मैडम किती क्वेश्चन झाले केमिस्ट्री? फर्स्ट झालं फक्त. फर्स्ट क्वेश्चन का ही फर्स्ट की सेकंड? आता सेकंड है. एक ही क्वेश्चन हुआ केमिस्ट्री का. गैसियस वॉल्यूम सोचा भी नहीं था. नेक्स्ट, which of the following compounds cannot
demonstrate the law of multiple proportions. Multiple proportions. First option is NO and NO2. Second option is CO and CO2. Third option is H2O and H2O2. Fourth option is NO2S, Na2S and NaF. Na2S and NaF. तने भोईर ने एक ऐसा कमेंट किया है, जो पढ़ के बहुत हंसी आ रही है. मैं नाम बताऊंगा तने भोईर का. Are you ready with the answer? Silence, guys. Silence. Are you ready with the answer? Option D. Say the option. And आपका ये जवाब बिल्कुल सही है. +1. फाइनली केमिस्ट्री राउंड में +1 मार्क्स मिल गया है टीम स्टेलर्स को. नेक्स्ट, हाउ मेनी grams of H2O are present in 0.25 moles of H2O? 0.25 moles of H2O. Options are 4.5, 18, 18, 0.25 and 5.4. 5.4. You want me to repeat the question? How many grams of H2O are present in 0.25 moles of H2O? Options are 4.5, 18, 18, 0.25 and 5.4. मैडम कितना क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन ऑफ राउंड 2 केमिस्ट्री. इसके बाद और मजा आने वाला है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग और बजर दोनों चीजें आने वाली है लास्ट राउंड में. यस, यू आर रेडी विद द आंसर? व्हाट इज द आंसर? A 4.5. एंड ये जवाब बिल्कुल सही है. तालियां. टीम स्टेलर को कम सपोर्ट मिलते हुए टीम लाउड को बहुत ज्यादा सपोर्ट है. नेक्स्ट, which of the following, fourth question of second round, which of the following has the largest number of atoms? Largest number of atoms. First option is 1 gram aurum, means gold, right? बराबर ना? 1 gram aurum solid. Second, 1 gram sodium solid. Third, 1 gram lithium solid. Fourth, 1 gram Cl2 gaseous. The question is, which of the following has the largest number of atoms? मैडम चौथा क्वेश्चन है. Fourth question of round 2. फिलहाल इनका स्कोर अगर देखा जाए, टीम लाउड का स्कोर है +9 और टीम स्टेलर का स्कोर +6. और उनके पास और कितने क्वेश्चंस बाकी है? ये फोर्थ है, तो और 2 ही क्वेश्चंस बाकी है. सो दे विल हैव टू परफॉर्म वेल इन द थर्ड राउंड, व्हिच इज बजर एंड नेगेटिव मार्किंग राउंड. बाहर गांव से भी टीम लाउड को सपोर्ट मिलते हुए बाहर गांव टीम लाउड जो टीम वर्क हमें टीम लाउड में देखने मिलता है, वैसा ही टीम वर्क हमें टीम स्टेलर में देखने मिले. इसकी आशा करते हुए मैं इस क्वेश्चन का जवाब पूछना चाहूंगा टीम स्टेलर को. टीम वर्क मीन्स ग्रेट वर्क.
बहुत ही डिटेल्ड एंड डीप डिस्कशन होते हुए। आर यू रेडी विद द आंसर? यस। विघ्नेश मेरी तरफ देखते हुए। श्रीमान आपका ये जवाब बिल्कुल सही है, तालियां। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ राउंड 2 फॉर टीम स्टेलर। फिलहाल जो स्कोर है +7 टीम स्टेलर राइट and team loud is +9 with a lead of 2 points. Last question of round 2. The question is, principal quantum number describes which of the following? First option is shape of orbital, second option is spin of electron, third option is size of orbital, fourth option is orientation of orbital electron cloud. Yes. इतना इजी फाइनल में एडवांस क्या नहीं चाहिए? साइज ऑफ ऑर्बिटल बिल्कुल सही जवाब, +1। इस तरीके से दो राउंड्स के बाद टीम लाउड का स्कोर है +9 और टीम स्टेलर का स्कोर है +8। अब हम शुरू करेंगे बजर राउंड 3, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक के सामने बजर रहेगा। टीम स्टेलर कोई एक बजर चूज कर लो, आपको जो चूज करना है। बजर 1। टीम लाउड एक बजर चूज कर लो, बजर 2। नहीं, दूसरा कोई बजर चूज कर लो। पिक ऑफ। यस। तो टीम एक बार हाँ कोई भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। एक बार टीम लाउड अपना बजर बता के बताए। बजर 2, बजर 5 एंड टीम स्टेलर अपना बजर अलग अलग है। आप अपना बजर बताइए। आप अपना ऑलमोस्ट सेम है। पिक अ डिफरेंट वन। यस दैट वन। यस आपका बजर यस डिफरेंट है। लेट्स स्टार्ट। So in total now in the rapid fire round we'll be asking 20 questions. Yes, 20 questions. You have 3 options. एक तो आप बजर दबा के आंसर दे सकते हैं सही वाला, या तो आप बजर दबा के गलत वाला आंसर दे सकते हैं, या तो आप पास बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सर डाउट है। Yes. बजर दबाया तो सही गलत कुछ भी हो, लेकिन बजर दबाने के बाद में पास बोल सकते हैं? नहीं, बजर दबाने के बाद पास नहीं बोल सकते। और एक चीज, जिसने बजर दबाया उसने आंसर दिया, उसका आंसर गलत हुआ, वो क्वेश्चन नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ओके। वो क्वेश्चन दूसरी टीम को नहीं पूछा जाएगा। तो वी विल टेल द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सबको क्लियर है? एंड नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्क्स विल बी +2 फॉर ईच क्वेश्चन and negative marks will be -1 for each question. 50% negative marking है। बजर दबाया तो -1 है वो। बजर दबाया रॉन्ग दिया -1। ठीक है, या पास बोला जो कुछ हुआ तो माइनस। पास बजर दबा के पास नहीं कर सकते। बजर दबा के यू हैव टू आंसर। ओके, बजर दबाने के पहले यू कैन से कि हमको नहीं पता बाबा पास। ठीक है, जब दोनों टीम्स पास बोल देंगी तो मैं नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द
फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अभी फिलहाल जो स्कोर है, टीम लाउड +9 पे है, टीम स्टेलर +8 पे है, तो बहुत तगड़ी कंपटीशन होने वाली है। अगर टाई होता है इन केस, तो आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जो सबसे पहले आंसर करेगा वो जीत जाएगा, ठीक है? और ये तब तक चलेगा जब तक टाई ब्रेक नहीं होता। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑब्वियसली आएगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बजर का फाइनल डिसीजन मैडम और मेरे हाथ में रहेगा, ठीक है? हम लोग टाइम भी देखेंगे, तो कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं करेगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। Which of the following is not a fundamental unit? Options are centimeter, kg, centigrade, volt. ये पहले बचा ना? Yes. Answer? D volt +2. Next, an object thrown from a. You be ready with the. An object thrown from a moving bus is an example of. Options are uniform circular motion, rectilinear motion, projectile motion. Yes? Correct. +2. Talia. The bob of a conical pendulum undergoes dash. Options are, repeating the question, the bob of a conical pendulum undergoes. First option, rectilinear motion in horizontal plane, uniform motion in horizontal circle, uniform motion in vertical circle, rectilinear motion in vertical circle. Options are rectilinear motion in horizontal plane, uniform motion in horizontal circle, uniform motion in vertical circle, rectilinear motion in vertical circle. The bob of a conical pendulum undergoes which of the following? No team is taking the risk to answer this question. May I consider it a pass? Guys, teamwork. Teamwork, guys, teamwork. Pass. May I consider it as a pass? Team loud? Pass? Pass. Team stellar? Pass. So the correct answer was uniform motion in horizontal circle. Next, for uniform acceleration in rectilinear motion, which of the following is not correct? For uniform acceleration in rectilinear motion, which of the following is not correct? First option is velocity time graph is linear. Velocity time graph is linear. Second option, acceleration is the slope of velocity time graph. Second option, acceleration is the slope of velocity time graph. Third option, area under velocity time graph is equal to displacement. Third option, area under velocity time graph is equal to displacement. Fourth option, velocity time graph is non-linear. Fourth option is velocity time this. What is the option? Velocity time. Option D, correct. +2. Velocity time graph is non-linear. +2 for team loud. And what is the score for round 3? Team loud 2 and team stellar 4. 4. Yes. बहुत ही काटेगी टक्कर है guys. फिजिक्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं. Next question is, two charges of 1 coulomb each are placed 1 meter apart in free space. The force between them will be. Two charges of 1 coulomb each are placed 1 meter apart in free space. The force between them will be. First option 1 Newton. Second option 9 into 10 raised to 9 Newton. Third option 9 into. बिल्कुल सही जवाब. +2. +2 for team stellar. Next. अभी तक टीम टेलर का स्कोर है +6 और टीम लाउड का स्कोर है +2 ना. +2. 2 point charges of +5 microcoulomb are so placed
that they experience a force of 2-point charges of plus 5 microcoulomb are so placed that they experience a force of 8 into 10 raised to minus 3 Newton. They are then moved apart. They are then moved apart so that the force is now 2 into 10 raised to minus 3 Newton. They are then moved apart so that the force between them is now 2 into 10 raised to minus 3 Newton. The distance between them is now what? Clear with the question? Options are 1/4 the previous distance, double the previous distance, बिल्कुल सही जवाब, +2 for team loud, अभी स्कोर है +4 team loud and +6 team stellar. और टोटल क्वेश्चंस कितने हुए मैडम? 5 और एक पास हुआ, 6 क्वेश्चंस हुए अभी तक. Next, you are given 4 bulbs of 25 watt, 40 watt, 60 watt and 100 watt of power. You are given 4 bulbs of 25 watt, 40 watt, 60 watt and 100 watt of power. Which of them has lower resistance? Which of them has lower resistance? Which of them has? Yes. बिल्कुल सही जवाब, 100 watt. +6 टीम के स्कोर्स इक्वल हो गए हैं राउंड 3 में. राउंड 3 में टीम के स्कोर्स इक्वल है, +6 ईच. टोटल क्वेश्चन 7 हो गए हैं. ओके, तो फिलहाल लीड अगर देखा जाए राउंड 1, 2, 3 का, तो टीम लाउड है with +1. अभी तक किसी भी टीम का स्कोर नेगेटिव नहीं हुआ है in this particular round. Next, दोनों के स्कोर्स इक्वल है. The wire of length capital L and resistance capital R is stretched. The wire of length capital L and resistance capital R is, this question is done, नहीं, is stretched so that the radius of cross section is, I think this question was done, sorry, mistaken. Next, masses of 3 pieces of wire made of the same metal, masses of 3 pieces of wire made of the same metal are in the ratio 1:3:5. Masses of 3 pieces of wires made of the same metal are in the ratio 1:3:5, and their lengths are in the ratio 5:3:1, and their lengths are in the ratio 5:3:1. Then ratios of their resistances are, options are 1:3:5, 5:3:1, 1:15, 15:125. Option C, final. Sure? Umesh, come on. 125, 50. अरे तेरे को जो जॉब दिया है 50 रुपया काट, 50 रुपया काट. 125. The correct answer was option D, जो मैंने बोला है. मैडम -1 प्लीज. मला आन्सर सांगा. अरे म्यूजिशियन. The correct answer was 125:15:1. So अभी काटे की टक्कर चल रही है. 8 क्वेश्चन and the scores are equal, guys. Scores are equal with 40. बहुत ही काटे की टक्कर चल रही है. Scores are equal. Next, total questions 8 झाले ना. The internal resistance of a cell is 2 volt. The internal resistance of a cell of EMF
2 वोल्ट EMF बोलना था, EMF 2 वोल्ट is 0.1 ohm, is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 0.9 ohm, 0.9 ohm. The voltage across the cell will be, the voltage across the cell will be, repeating the question, internal resistance of a cell of EMF 2 volt is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 0.9 ohm. The voltage across the cell will be, no options, आपको आंसर देना है न्यूमेरिक. The voltage across the cell will be, options नहीं, you have to answer without options. The voltage across the cell will be, घटिया अकाउंट डिपार्टमेंट खराब ही तो है. कौन सी लिखते बच्चा? Loud, yes. 4. What 4? Voltage across the cell. Come on, Vignesh. बिल्कुल गलत जवाब. इंटरनल रेजिस्टेंस था 22.9 करके निकालना था. The correct answer was 1.8 volts. Next, madam -1. Next question. 100 cells, each of EMF 5 volt. 100 cells, each of EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm and internal resistance 1 ohm are to be arranged so as to produce maximum current in a 25 ohm resistance. 100 cells, each of EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm are to be arranged so as to produce maximum current in a 25 ohm resistance. Each row contains equal number of cells. Each row contains equal number of cells. The number of rows should be, the number of rows should be, the options are 2, 4, 5, 100. 2, 4, 5, 100. 100 cells, each of EMF 5 voltage and internal resistance 1 ohm are to be arranged so as to produce maximum current in a 25 ohm resistance. Each row contains equal number of cells. The number of rows should be 2, 4, 5, 100. 100. Vignesh, इसका 100 रुपए काटने वाला हूँ. विघ्नेश, विघ्नेश, एंड आपका जवाब है गलत. मेरा ही पूरे पूरे कर रहे हैं. The correct answer was 2. मैडम -1. अरे कोणतं सॉन्ग लावून सॉन्गच नाही माहिती. 10 questions. हम कंपटीशन के फाइनल फेज में पहुंच चुके हैं. We are in the final phase. 10 क्वेश्चन हो गए हैं. टीम लाउड. 10 क्वेश्चन हो गए हैं. 10 क्वेश्चन बाकी है एंड स्कोर है मैडम टीम स्टेलर. टीम स्टेलर टोटल स्कोर 150. वापस इक्वल हो गया. नहीं 13 14 या राउंडचा या आमचा निगेटिव्ह आता झालं ना. तुम्ही त्याच्या आधी 2 केले आहेत ना निगेटिव्ह. हा राईट. ओव्हरऑल स्कोर किती इक्वल झाले आता. व्हॉट इज द टोटल? 30 आणि 13 13 is super intense competition. और अभी अगर विघ्नेश ने सही जगह म्यूजिक नहीं बजाया तो मैं विघ्नेश को बजाऊंगा. नेक्स्ट टाइम लास्ट 10 क्वेश्चंस. चैट में बताइए कि आपको लग रहा है ये कंपटीशन टाई होगा क्या? मुझे लग रहा है कि टाई होगा. लेट्स सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक कंडक्शन
through a semiconductor, electric conduction through a semiconductor is due to, options are electrons, option A, option B holes, option C Electrons and holes. without options. Correct answer guys, +2. Next, current through a reverse bias PN junction increases abruptly at, current through a reverse bias PN junction increases abruptly at, options are 0 volt, 0.3 volt, 0.7 volt और breakdown voltage. दोनों ही टीम्स के यस परफेक्ट आंसर +2. तो इसी के साथ फिजिक्स के क्वेश्चन खत्म हुए. टोटल क्वेश्चंस कितने हुए? 12. लास्ट 8 क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग फ्रॉम केमिस्ट्री. आपके ग्रुप में जो केमिस्ट्री में स्ट्रांग रहेगा उसको आगे कर देना. बस रे लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लिखना. Cl2 gaseous plus Cl2 gaseous plus 2NO gaseous, Cl2 gaseous plus 2NO gaseous, इक्विलिब्रियम का साइन, रिवर्सिबल रिएक्शन. 2NOCl gaseous, 2NOCl gaseous. The concentration of NOCl, मतलब प्रोडक्ट का concentration, the concentration of NOCl will increase if the equilibrium is disturbed by, option A adding chlorine, option B removing NO, option C adding NOCl, option D removal of chlorine. Option A adding chlorine, option B removing NO, option C adding NOCl, option D removal of chlorine. Yes, टीम स्टेलर, टीम लाउड ने बजाया है. Option A. Which बिल्कुल सही जवाब, +2. Next, for the following equilibrium, पेज चाहिए, पेज देना भाई, ये लो. ये डन गाइस. कितने क्वेश्चन आए मैडम? 13. 7 questions remaining. Let's start. Silence. For the following equilibrium, A gives 2B plus heat. A gives 2B, B for Bombay, plus heat. The number of A molecules increases if, the number of A molecules increases if, option A volume is increased, option B temperature is increased, option C catalyst is added, option D concentration of B is decreased. Yes team, Option B, temperature. बिल्कुल सही जवाब, +2. The following equilibrium, H2O liquid is in equilibrium with H plus aqueous plus OH minus aqueous. H2O liquid, reversible chemical equilibrium, H plus aqueous plus OH minus aqueous is what kind of equilibrium? Option A dynamic, option B static, option C physical, option D mechanical. कोई भी टीम इंटरेस्टेड नहीं लग रही. सिलेबस के बाहर का, सिलेबस के बाहर का, सिलेबस के बाहर का है ऐसा कमेंट आ रहा है. कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है? डायनामिक, स्टैटिक, फिजिकल, मैकेनिकल. गाइस आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं. जिंदगी में हमेशा इन सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. ये क्विज आपको ये चीज भी सिखाता है, जिंदगी में हमेशा इन सिलेबस क्वेश्चन नहीं आने वाले. ऑप्शन बी विग्नेश, कम ऑन. टीम टेलर, कम ऑन. मोए बिल्कुल गलत जवाब, -1. आंसर इज डायनामिक. मैडम स्कोर्स
टीम लाउड प्लस 16 स्कोर, टीम स्टेलर 17। बहुत ही तगड़ी कंपटीशन है। टोटल क्वेश्चंस 14 कंप्लीट। 6 क्वेश्चंस बाकी है। 1 पॉइंट की बढ़त के साथ टीम स्टेलर आगे है। The angle between the two covalent bonds is minimum in. The angle between two covalent bonds is minimum in. Options: CH4, C2H2, NH3, H2O. CH4, C2H2, NH3, H2O. टीम लाउड 1 पॉइंट से पीछे है। ये सवाल का जवाब देके वो 1 पॉइंट से आगे जा सकते हैं। किससे जवाब? टीम लाउड? स्टेलर किससे? टीम स्टेलर, यस। CH4। कम ऑन विघ्नेश। टीम लाउड, टीम लाउड। इस तरीके से दोनों का स्कोर इक्वल हो गया है, 17-16। The correct answer was water, H2O. Next, and total question 15. 5 questions बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। मिनिमम ही है। Boiling voltage minimum ही है। क्या अभी मैं भूल गया क्वेश्चन यही है। हाँ बराबर है। चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए नॉलेज दोनों टीम डिस्कस कर रही है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कॉम्पिटिटर कि कहीं सर ने तो गलत जवाब नहीं दिया है। लेट्स स्टार्ट। लास्ट 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हिच O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। व्हिच O2 सॉरी O2 molecule is paramagnetic. It is explained on the basis of following. First, O2 molecule is paramagnetic is explained on the basis of hybridization, valence bond theory, molecular orbital theory and ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर। बिल्कुल सही जवाब। टीम लाउड 18 मार्क्स, टीम स्टेलर 16 मार्क्स। लास्ट 4 क्वेश्चंस। गाइस बहुत इंटेंस चल रहा है। when volume of equilibrium reaction लिख लो। कार्बन गैसियस प्लस H2O गैसियस, रिवर्सिबल साइन इक्विलिब्रियम वाला, gives कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैसियस प्लस हाइड्रोजन H2 गैसियस। ठीक है, इक्विलिब्रियम लिख लिया सबने। रिपीटिंग, कार्बन प्लस वाटर gives कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सारा गैसियस है। when volume of the equilibrium reaction is increased at constant temperature, the equilibrium will dash. Options: option A shift from left to right, option B shift from right to left, option C be unaltered। बिल्कुल सही जवाब। टीम लाउड 20 and टीम स्टेलर 16। Team Stellar is at 16, Team Loud is at 18, and total 3 questions remaining. 20 sir। टीम लाउड 20। Team Loud is at 20 and Team Stellar 16। 4 मार्क्स की लीड है। और क्वेश्चन कितने? 3 ही बाकी है। 3 क्वेश्चंस बाकी है। अगर टीम स्टेलर को जीतना है तो आगे के तीनों क्वेश्चंस के सारे आंसर्स राइट देने पड़ेंगे, और अगर उन 3 में से 2 आंसर्स राइट दिए और एक पास हो गया तो टाई हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। लास्ट 3 क्वेश्चंस। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वेस्पर। ये थियरी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, option B the shapes of molecules and ions,
Option C, the electronegativities of elements. Option D, type of bonding in compounds. Check Sir, check sir. check तो करने थे उनका था 46 13 73 32 एक सेकंड 46 13 73 46 13 टीम आउट नहीं, ऑप्शन ऑप्शन डी सेरी ऑप्शन सर टाइप्स टाइप ऑफ ऑप्शन डी कम ऑन प्रेशर के बारे में बेचारे ऑप्शन का नंबर ही भूल गए and I cannot repeat the options after a certain time because आपको unfair advantage मिल जाएगा D was not the answer B was the answer the six intense and the score is team love 19 and team stellar 16 oh 3 marks 2 questions 3 marks and 2 questions थोड़ा थोड़ा पब्लिक का व्यू ले ले पब्लिक का व्यू ले ले चलो मैडम पे कैमरा लाए थे मैडम तुमकी फेवरेट टीम कौन सी है टीम लाउड की टीम स्टेलर मॅडम साठी कोण डावा कोण उजवा नाही दोन्ही टीम इक्वल ओके तुम्हाला काय वाटतं कोण जिंकणार आहे टीम लाउड ओके अपने ऑडियंस में कैमरा घुमाया जाए ऑडियंस अथर्व दावतर एक तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है आज तुम लाउड को सपोर्ट करने आए हो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा लाउड ही जीतेगा सो हम टीम लाउड को बहुत सपोर्ट है टीम स्टेलर के सपोर्टर्स हाथ उठाए एक ही सपोर्ट दो सपोर्टर है टीम 4 सपोर्टर है क्लच चाहिए क्लच चे कुराडे लेट्स मेक सम नॉइज टीम लाउड वाले आवाज करेंगे जो सपोर्ट कर रहे हैं टीम लाउड ऐसे चिल्लाना है ठीक है 1 2 3 देखो सर गुस्सा हो जाएंगे टीम स्टेलर वाले 1 2 3 कुराडे को सपोर्ट कर रही है मैडम व्हाट इज द स्कोर उनका क्लच क्लच भाई क्लच विराट कोहली क्लच चाहिए क्लच विराट कोहली एक हर्षी मैंने एक ट्रिक क्वेश्चन बचा के रखा है लास्ट क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन है मैंने बचा के रखा है सेकंड क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट द रिलेशन between Kc and Kp for the reaction no repetition A plus B gives equilibrium में A plus B दोनों gaseous है equilibrium का साइन है 2C that is gaseous plus D that is gaseous is options are Kp is equal to Kc and RT. Kp equal to Kc RT की power परत बघा जी डेल्टा एन जी RT की बात क्या थी Kp equal to Kp equal to Kc and RT की power 1. मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ ऑप्शन है इथे थोड़ा वेगळं दिसतंय परत सेम क्वेश्चन सही है ना इथे ऑप्शन वेगळा है केसी एंड केपी मुझे सही लग रहा है कि क्या आंसर सही है ऑडियंस बोल सर कुराडे उसने बोला केपी RT1 इक्वल टू आरटी इनटू केसी एंड रिएक्शन है A plus B दोनों गैसियस गिव्स 2C plus D
दोनों गेशियस। यहाँ पे कुछ तो y दिया करेक्ट है +2। कुराडे Now I'll tell you the possibilities because I'm Doctor Strange. अगर टीम लाउड आंसर देती है और वो सही हो जाता है, टीम लाउड जीत जाएगी, राइट। अगर टीम टेलर आंसर देती है तो वो जीत जाएगी। अगर टीम टेलर आंसर देती है और वो गलत हो जाता है तो टाई हो जाएगा। कैसे टीम टेलर जीत जाएंगे ना, वो जीत जाएंगे। ते पुढे हाँ, तो टीम लाउड अगर नेगेटिव करती है, यहाँ पे लिखिए 90, हाँ 90। अगर टीम लाउड आंसर गलत करती है तो टाई हो जाएगा। अगर टीम टेलर आंसर देती है तो जीत जाएंगे। अगर पास होता है तो भी यही जीत जाएंगे। ठीक है, कुराडे क्लच। I was waiting for this moment my whole life. इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन बचा के रखा है। मैथ्स का It is not maths, it is chemistry only. थाला Let's see. थाला टाई करेंगे। अमोल सर फॉर रीजन 1, 2, 3, start. जय शाह। बजर राउंड है, संभाल के। Pin drop silence. The number of molecules in 22.4 cm cube of nitrogen gas at STP is option A 6.022 into 10 raised to 20, option B 6.022 into 10 raised to 23, option C 22.4 into 10 raised to 20, option D 22.4 into 10 raised to 23. Answer. 6.0 to 20. And the answer is correct. And team loud 19. So let me give the final instructions. तो बहुत ही intense competition था। जानबूझ के मैथ्स एंड बायो साइडलाइन किया था, not to give anyone any fair advantage. फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे। गाइस साइलेंस। जानबूझ के हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे थे। राउंड 1 फिजिक्स का था जहां पे टीम लाउड आगे थी। राउंड 2 केमिस्ट्री का था, आई थिंक जहां पे दोनों टीम्स ऑलमोस्ट इक्वल थी। राउंड 3 वाज अ बजर राउंड जहां पे हमने 20 क्वेश्चन पूछे थे, फिजिक्स के 12, केमिस्ट्री के 8, जिसमें हर क्वेश्चन में कौन जीतेगा वो चेंज हो रहा था। एंड तक कंपटीशन काटे का रहा, बट एंड में बिकॉज ऑफ कुराडे भाई इम्पैक्ट प्लेयर एंट्री अब प्लास्टिक सर्जरी टीम टेलर जीत गई है विद जस्ट 1 पॉइंट SQL 2024। इतना बड़ा कंपटीशन जो हमने लास्ट 10 दिन से चलाया है उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तो रहेगा, बट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा मिस्टर योगेश नेवरे सर के हाथ से। अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कल या फिर परसों मोस्टली ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्राइस रनर अप को भी प्राइज है, विनर्स को भी प्राइज है। सो बेसिकली 8 लोग को प्राइज है एंड देयर आर सम प्राइजेस along the tournament जो मैंने डिसाइड किए हैं along with the team जो मैनेजमेंट टीम है।
तो वो भी उसी दिन योगेश सर के सामने डिक्लेयर किए जाएंगे एंड वो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन लाइव स्ट्रीम होगा गाइस। एक बार सब लोग खड़े हो जाए। लाइव में नको करू बेटा। When I will say 1, 2, 3, you go team study work. 1,